एक मिनट रुक जाओ, रेडी होने दो। चलो ये कर लेते हैं, दिस कुड बी अ ग्रेट इंट्रो। Hi, I'm Akshay. Hi, this is Saurabh, and you are listening to the Founder Thesis podcast. We meet some of the most celebrated startup founders in the country. And we want to learn how to build a unicorn. If you Google the word maverick, I'm pretty sure that you will also find Dharamveer Chouhan's picture there as an example of an Indian maverick. Dharam showed signs of being a maverick very early in childhood, when he was living in a small town of Rajasthan, dreaming of making it big by playing games. This trait only grew stronger as he got older with some amazing adventures along the way before launching Zostel, the backpacker hostel, while he was still in the second year of IIM Calcutta. Dharam's never say die attitude has helped him through thick and thin and has established Zostel as a popular hospitality brand. Here's his fascinating journey of self-discovery. यार तो मैं अपना एंजॉय करता था, मैं काफी एक्सप्लोरर टाइप का था, तो मैं सोचता बहुत था। मतलब आई वुड से कि मतलब एटलीस्ट 10 साल तक तो कुछ मेरे ज्यादा गोल नहीं थे, एंड मैं अपना फन मस्ती में रहता था, वरना तो जस्ट मस्ती थी, ड्रीम्स चल रहे थे। एंड देन ये थोड़ा सा 10-1 साल के आप हो जाते हो ना, ठीक है, तब फिर थोड़ा सा पीपल आर लाइक व्हाट डू यू वांट टू गो डू व्हेन यू ग्रो अप एक्सेट्रा, आस्क यू व्हाट डू यू वांट टू डू व्हेन यू ग्रो अप, बट इफ यू टेल देम लेट्स से आई वांट टू बिकम अ पेंटर और लेट्स से अ म्यूजिशियन एक्सेट्रा, ऐसी कोई भी आप चीज बोलोगे तो दे आर स्टिल लाइक कि अभी तक सीरियस नहीं है ओवरऑल, ठीक है। मतलब कि व्हाट यू रियली वांट टू आस्क यू इज कि आप पैसे कैसे बनाओगे लाइफ में। देन मतलब फिर वो ऐसे चल रहा है, ठीक है, एंड देन पीपल आर आस्किंग मी, सो आई थॉट यार इस पे थोड़ा सोच लेते हैं, ठीक है। देन आई नोटेड डाउन एंड आई ऑब्जर्व्ड माय सेल्फ कि यार मैं क्या करता हूँ पूरे दिन। तो आई यूज्ड टू प्ले गेम्स, सो आई फिगर्ड आउट यार कि यार अगर बड़े होके इफ देयर इज समहाउ I can make money making games, ठीक है। एंड तो उस टाइम तक प्लेइंग गेम्स से मेक मनी का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था, ठीक है। तो मेकिंग मनी प्लेइंग गेम्स वाज अ वेरी एम्बिशियस गोल कि यार हाँ यार, इफ यू कैन मेक मनी मेकिंग गेम्स तो we'll have a फुल मोक्षा सीन्स। सो आई एम लाइक ठीक है, तो अब ये गेम के लिए कैसे बनाए गेम, एंड आई एम लाइक 10 years old and I'm figuring things out, ठीक है। एंड देन आई रियलाइज कि हाँ यार ये जो भी है मेरे डेस्कटॉप में, एंड आई गॉट अ कंप्यूटर व्हेन आई वाज इन 99, मतलब आई एम 90 बॉर्न, सो मतलब 9-10 साल में, ठीक है। एंड उसमें इंसाइक्लोपीडिया वगैरह रहती थी, सो आई स्टार्टेड टू अंडरस्टैंड, मतलब हाँ ये माइक्रोसॉफ्ट करके है, ये लोग गेम्स बनाते हैं, ईए का है ये इलेक्ट्रॉनिक आर्ट्स, जो लोग गेम्स बनाते हैं, और इसमें इंजीनियर्स होते हैं, मतलब हमारे जो ऐसे साइंस वाले लोग होते हैं, कुछ इंजीनियर्स होते हैं इसमें। तो आपको लाइफ में अगर पैसे बनाने हैं गेम बना के, तो आपको इंजीनियर बनना है, ठीक है। सो मतलब कि व्हेन आई वाज इन 6th स्टैंडर्ड आई वाज लाइक हाँ यार, मतलब आई हैव टू डू एन इंजीनियरिंग, आई हैव टू गो टू आईआईटी और दिस बिट्स प्लानिंग थी। एंड देन मतलब कैन आई थिंक इट कंटिन्यूड फॉर अ कपल ऑफ इयर्स, मतलब वो सबको पूछना रहता ही था, ठीक है, कि बड़े होके क्या करोगे। सो आई यूज्ड टू मतलब गिव अ वेरी स्ट्रेट आंसर कि भाई देखो, ठीक है, बड़े होके मुझे गेम्स बनाने हैं, उसके लिए मुझे इंजीनियर बनना है, एंड उसके लिए मुझे आईआईटी में जाना है, तो उसका एग्जाम अभी 12th में होगा, ठीक है। तो अभी तो डिस्टर्ब करो मत, क्योंकि अभी मैं स्टडी कर रहा हूँ। सो यार मतलब I feel very much like I'm one of the early internet's child kind of a person, because I think obviously अब तो every child has an internet, but upbringing के time पे, मतलब when you have internet in 6th standard in India, मतलब मैं जोधपुर में था, I never knew कि मैं geek हूँ, ठीक है। अब मुझे मालूम चलता है कि शायद मैं बहुत बड़ा geek था, ठीक है। बट बैक देन मतलब कि मैं यार मतलब 28.8 kbps पे डायल अप इंटरनेट के अंदर आई एम जस्ट डाउनलोडिंग डिफरेंट .exe फाइल्स फ्रॉम download.com, मतलब शेयरवेयर में जाके, और कोई बीटा डाउनलोड, बीटा भी वर्ड नहीं होता था, शेयरवेयर टाइप ही वर्ड होता था, तो वो पूरा डाउनलोड कर रहे हैं। घर का फोन लाइन निकाल दिया कि किसी का फोन आता है तो हमारा डिस्कनेक्ट हो जाता है, 2-2 घंटे लगते थे 8 MB की फाइल डाउनलोड होने में, एंड एक्सेट्रा। दिस वाज अ होल कार्टन जिसके अंदर मतलब सारी सीडीज, आई यूज्ड टू हैव कंप्लीटली फिल्ड सीडी रैक्स, और मैं जोधपुर के अंदर जो भी मेरे फ्रेंड्स एक्सेट्रा होते थे, सो आई यूज्ड टू सप्लाई देम, एंड अ लॉट ऑफ माय फ्रेंड्स वर इन कॉलेजेस। तो मतलब इवन व्हेन आई वाज इन दिस 6th स्टैंडर्ड, सो कपल ऑफ फ्रेंड्स समटाइम यूज्ड टू कम एट होम इन बाइक, यार हाँ अंकल धर्मवीर है, एंड माय फादर इज लाइक यार इसके यार इतने बड़े बड़े इसके दोस्त बाइकों पे घूम रहे हैं, ये अभी तो 11-12 साल का, जैसे है क्यों, इसकी दोस्ती है कहाँ। बट फ्रॉम अ इंडिविजुअल एंगल आई थिंक इट वाज अ ग्रेट एक्सप्लोरेटरी टाइम इन दैट अर्ली डेज ऑफ इंटरनेट। आई रिमेंबर एक
ये .com बबल फूटने से पहले, मतलब आई थिंक इन जस्ट अर्ली 2000 और बिफोर 2000, मतलब देयर वाज दिस netfundu.com, सम आई थिंक somebody got some VC funding और एक्सेट्रा, एंड आई यूज्ड टू जस्ट साइन अप, मतलब वहां पे मैं साइन अप कर रहा हूँ अपना, मैं आई वाज इन लिटरली फोर्थ क्लास, ठीक है, और मैं धर्मवीर सिंह चौहान से मतलब मैंने साइन अप करा है, इन लोगों ने मुझे विजिटिंग कार्ड भेजे मेरे ईमेल के साथ में, पता है, ठीक है। ठीक है, आई स्टिल थिंक यार लोग अभी तक उतना पैसा बर्न नहीं कर रहे यार कि रजिस्टर करते ही एक बिजनेस कार्ड तो भेजो यार। ठीक है, ठीक है, एंड देयर वाज लॉट्स ऑफ फनी थिंग्स दैट हैपेंड ऑन इंटरनेट, लाइक फिर ये अपना जो bazi.com था इंडिया में, मतलब जो ईवे नहीं था तो bazi.com था, ठीक है, एंड तो उसके ऊपर क्या हुआ कि मैंने एक ऐसे ही हीरो होंडा का वॉलपेपर डाउनलोड करके एंड मैंने ऐसे ही अपलोड कर दिया कि हम होंडा बाइक बेच रहे हैं, मतलब मैं तो ऐसे एक्सपेरिमेंट, यू नो, जस्ट फूलिंग अराउंड, ठीक है, अकाउंट बनाया, मैंने डाल दिया कि हाँ भाई जैसे बाइक बेच रहे हैं, और उसमें हर बिड, उसमें बिड करना होता था, ठीक है, कि भाई कोई भी आदमी आ रहा है बिड कर रहा है, एंड द बिड विल एंड इन 24 आवर्स, और 100 रुपए से बिड बढ़ती रहती थी, 2001 की बात होगी, 18-20 साल हो गए, एंड वो 100 रुपए से कुछ 7,800 रुपए में बिका वो, मतलब 78 पीपल ने उसकी बिड बढ़ गई, और फिर मेरे को डर लगता था यार, मेरे को लगा शिट यार बाइक तो है ही नहीं, ये तो सच्ची में बिक गई, ठीक है, बाइक नहीं, हमें जेल हो जाएगी मुझे, मतलब आई वाज ऑलवेज यूज्ड टू थिंक पता मेरे क्या पता क्या हो रहा है, ठीक है, फिर मेरे घर पे फोन कर रहे हैं उनके कस्टमर केयर वाले, फोन आ रहा है, वो कह रहे हैं हाँ धर्मवीर सिंह चौहान है, मेरे पापा कह रहे हैं यार कि वो लड़के का फोन आ रहा है कहीं से, वो दिल्ली विल्ली से, क्या है जाओ बात करो, बहुत सीरियस लग रहा है मामला, एंड दे लाइक हाँ आपने बाइक बेची थी, मैं जस्ट कट द फकिंग फोन, मैंने कहा भाई पता नहीं क्या है। एक महीने तक मैंने ईबे खोला ही नहीं, मैंने कहा पता नहीं ट्रैक व्रैक कर लेंगे। तो माय ग्रैंडफादर आल्सो हैड, यू नो, ऑब्वियसली वेरी ग्रैंड एम्बिशंस फॉर देयर ग्रैंडकिड्स, सो इट वाज थॉट थ्रू कि भाई वी विल गो टू इंडियाज बेस्ट स्कूल, ऑब्वियसली, ठीक है, एजुकेशन करनी है तो बेस्ट जगह से ही करनी है, मतलब नहीं तो क्यों करनी है टाइप। जब मैं पैदा हुआ था, ठीक है, एट दैट पॉइंट इटसेल्फ माय ग्रैंडफादर हैड बॉट मतलब दून स्कूल का एडमिशन फॉर्म फॉर यू नो ऑल फोर ऑफ अस। आई सो वी डिड अ लॉट ऑफ बॉन्डिंग, यू नो, मी एंड माय ग्रैंडफादर इन दिस व्हेन आई वाज इन जोधपुर, आई वाज अ बिट ग्रोन अप, मतलब ये 13-14 साल के अंदर वी यूज्ड टू हैव डीप इवनिंग वॉक्स फॉर 1 hour और सो एवरी डे, यू नो, हम जाते थे जूस शॉप तक एंड देन वी ड्रिंक सम जूस एंड देन वॉक बैक 4-5 किलोमीटर, एंड सो दिस इज द टाइम, यू नो, दिस इज द टाइम व्हेन आई, यू नो, रियली स्टार्टेड आस्किंग हिम एनीथिंग, मतलब ओवरऑल, मतलब कि अभी तक भी मैं लाइफ में मतलब ऐसे किसी से कुछ भी पूछो तो मतलब आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम पीपल गेट फ्रस्ट्रेटेड और दे गिव डम आंसर्स, समथिंग लाइक दैट, बट लाइक विद माय ग्रैंडफादर, यू नो, वी हैड दिस ग्रेट बॉन्ड जिसके अंदर मैं मतलब आई कुड रियली आस्क हिम एनीथिंग, एंड देन, यू नो, आई स्टार्टेड आस्किंग हिम सम डीप क्वेश्चंस दैट, यू नो, वर समटाइम्स ट्रबलिंग मी, एंड तो एनीवेज यार आफ्टर दिस, ये बिट्स पिलानी का एक स्कूल होता है, बिरला पब्लिक स्कूल पिलानी करके, एंड यू नो इफ यू गो ओवर देयर एंड यू स्पेंड 4 years over there and you are among the toppers, so you get direct admission into BITS Pilani. apply करा, वहां का एग्जाम था तो just cleared it through, so मतलब it was a very I think it was just a 2-year journey, but I think at that point of time मतलब उस एज के अंदर it really broadened my perspective of everything, ठीक है, मतलब I really realized, you know, obviously I was you know, I was having a great time in Jodhpur, but फिर कहीं ना कहीं पे जब तक आपको सब पता ही नहीं है कि यार कि बाकी दुनिया में हो क्या रहा है, so you don't have a reference overall, ठीक है, and I think it really impacts your conversation, it impacts your thoughts, etc. You don't really know, you know, how well you measure, मतलब आप अपनी गली में कितने भी छक्के मार रहे हो, आपको पता नहीं ना यार, मतलब बेन स्टोक्स की बॉल पे मार पाएंगे कि नहीं मार पाएंगे, मतलब you don't ever know overall, ठीक है, so you have to go and fight, ठीक है, मतलब कि you know in those environments, तो I think वो पिलानी से जाके I really realized कि यार मतलब यहाँ से पिलानी से भी शायद से I will have to move forward यार, अभी यहाँ पे अब जो भी है अपने फॉर्मूलेज, ठीक है, उस फॉर्मूले के अंदर जो बाकी के 7-8 कॉलेज हैं IIT वाले, you know, let's go over there, ठीक है, और मैंने मतलब वो इंजीनियरिंग की डिप्रेस्ड लाइफ हम लोगों ने स्टूडेंट्स ने देख ली थी कि बच्चे सिगरेट पीते हैं, शॉर्ट्स में घूमते हैं, ऐसी कोई इंटरेस्टिंग लाइफ नहीं लग रही है बाहर से, ठीक है, सो आई वाज अमंग द टॉपर्स इन पिलानी, बट आई वेंट टू कोटा देन। ठीक है, तो धर्म आपने डिसाइड किया कि बिट्स पिलानी तो बहुत बोरिंग है एज अ करियर गोल, और फिर आप कोटा गए, तो कोटा का एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? सो कोटा तो अपनी औकात बता ही देता है फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है, आई रियलाइज्ड अर्ली ऑन के मतलब डाउट्स पूछने हैं लाइफ में तो ही अपन आगे बढ़ सकते हैं, और टीचर भी थोड़ा जानेगा करेगा, नहीं भी जानवाना तो भी अपना डाउट तो पूछेंगे तभी सीखेंगे, नहीं तो ऐसे शर्मा के तो होगा नहीं, इरोडोव करके हमारे यहाँ पे ऐसे टफ सी चीज होती है, तो आई जस्ट वेंट अहेड एंड यू नो सॉल्व्ड ऑल ऑफ देम एज वेल, उसको उसका IIT से कोई लेना देना नहीं है, वो बहुत ज्यादा, ठीक है, लाइक ऑल ऑफ द गुड पीपल से कि इतना सॉल्व करने की जरूरत नहीं है फिजिक्स, बट अगर आपको अपने आप को स्टड प्रूव करना है खुद को, ठीक है, तो आप जाके सॉल्व कर लो और खुश हो जाओ कि हाँ यार सॉल्व कर दिया, एंड देन आई स्टार्टेड कि यार अब चलो यार अब ये बहुत हो गया, अब और मेहनत करते हैं और फर्स्ट आते हैं, तो बाय दिस टाइम पता नहीं यार अभी तक मतलब यू नो मे बी आई डोंट नो हाउ आई थिंक नाउ, अभी अपन पहुंच
पहुंच जाएंगे वहां पे, बट इट वाज मतलब मेरे को IIT में जाना भी मतलब बहुत पहले से भी था, इट वाज माय ड्रीम गोल एक्सेट्रा, एंड समहाउ मतलब कि मेरे को ऐसा भी था कि यार अगर एग्जाम दे रहे हैं सही से तो फर्स्ट आना है एग्जाम में ओवरऑल, ठीक है, एंड स्पेशली अगर अपन मेहनत करेंगे तो फर्स्ट आ ही जाएंगे। मतलब आई कुडंट रियली फॉर अ लॉट ऑफ टाइम कि भाई यू नो कि आई डोंट कम फर्स्ट बिकॉज आई डोंट स्टडी, यू कैन ऑलवेज टेल योरसेल्फ दैट, ठीक है, कि यार देखो मैं अभी मेहनत नहीं कर रहा हूँ, मेहनत करूंगा तो मैं यूट्यूब के पॉडकास्ट सीरीज बना ही दूंगा, ठीक है, अभी मैं द टैलेंट इज ऑलवेज देयर। याद है कि एक एग्जाम में मैंने बहुत मेहनत करी एंड एवरी मंथ वी यूज्ड टू हैव एग्जाम, सो आई केम 20th एंड देन आई स्टडीड मतलब वेरी हार्ड, मैं सब और मेहनत करेंगे, मतलब आई जस्ट स्टार्टेड बैक, ठीक है, एंड देन आई केम 11th ओवरऑल, ठीक है, एंड देन आई क्विट, ठीक है, आई क्राइड व्हेन आई केम 11th, ठीक है, आई क्राइड माय हार्ट्स आउट। तो फिर मैंने सोचा यार कि अब थोड़ा सा लाइफ चिल करते हैं, हम देखो IIT टॉप तो कर नहीं सकते, एंड देन आई स्टार्टेड गोइंग बैक टू माय माई एडिक्शन, माई साइबर गेम्स, ठीक है। तो फिर वो कोटा के अंदर काफी नेक्स्ट लेवल, मतलब कि जैसा अभी तक आई थिंक मतलब कि गेमिंग सीन बाकी दुनिया में अब जो मल्टीप्लेयर गेम्स का बड़ा है, ठीक है, like we used to मतलब वो शटर डाउन करके I formed a couple of clans in Counter Strike, ठीक है, तो मतलब हमारा क्लैन होता था, and the routine back then was कि भाई अब you know after I got into this addiction the later half of my 11th class was that you know we'll wake up at you know somewhere let's say around 2 p.m. or something, ठीक है, and obviously you know कोटा में ऐसा होता है कि schools are not compulsory by now, so you know I'll wake up at 2 p.m. we'll go you know wherever we want to have lunch, हमारी mess होती थी, we'll pick up a friend on the way, okay, and then we'll go have lunch, and after the lunch we'll discuss, you know, and then after Counter Strike a couple of months we moved to Dota, okay, so Dota is a game as that's a genre called as MOBA, इसमें ऐसा होता है कि Defense of the Asians, इसमें तो आप there are 5 people teams and you have to, it's a 1 hour long game and heroes होते हैं, there's a lot of things inside, ठीक है, but back then it was a very obscure map, एक मतलब एक mod था एक game के अंदर, ठीक है, and it was like Dota 6.42, you know, जहाँ पे मतलब बहुत पुराना सा कोई मैप था, ठीक है, एंड वी यूज्ड टू प्ले ऑन दैट, एंड तो उस टाइम पे क्या होता था कि देयर वाज नो इंटरनेट कनेक्टेड, मतलब आप ऑनलाइन नहीं खेलते थे, ठीक है, तो वो जो लैन होता था उसी में हम 10-20 लोग इकट्ठा होते थे एक साइबर कैफे में, एंड हम लोग वो 5-5 लोग आपस में खेलते थे, ठीक है, एंड देन दिस होल मल्टीप्लेयर गेमिंग, यू नो, really blew my mind. You know, I'd been playing games for I don't know 10 years straight. You know, I used to play games, but all of those games were largely single player games, okay, they were all single player games, ज़्यादा कोई LAN WAN से connectivity नहीं थी, ठीक है, but as soon as I started playing Dota I really you know just completely left the single player genre large, ठीक है, and I felt totally different, मतलब कि you know there are different emotions that incite in you when you are defeating somebody or winning something or working as a team, etc. It was very engrossing, it was very very interesting than chemistry. तो फिर मतलब कि you know for the next 6 months you know we'll after lunch we'll go to this cyber cafe, and inside the cyber cafe we'll start playing, and by 10 p.m. you know he'll shutter down the night stay. It was 50 rupees I think for the night stay, and shutter down हो जाता है, फिर आप पूरी रात खेलते हो अंदर ही, थोड़ा पैटीज वैटीज भी कभी कभार मिल जाता है, और फिर सुबह 8-9 बजे हम उठते थे, फिर पोहा वोहा खाते थे, बाहर जाते थे, पैटीज पोहा खाते थे, तो काफी स्ट्रैटेजी, हमारे बहुत डीप स्ट्रैटेजी डिस्कशंस होते थे कि यार आज क्या क्या रहा, कल ये ट्राई करेंगे, ठीक है, and you know we spent I think thousands of hours in it, I don't know maybe, and eventually I think you know I just passed out, मतलब I was like blank in the IIT exam itself, ठीक है, तो मेरी 5000 रैंक आई, मतलब आई नेवर इवन न्यू 5000 तक रैंक आती है, मेरे को लगता था यार मतलब क्या IIT बॉम्बे कहाँ तक है, 2-2,500 तक है, ठीक है, सम लाइक 5000, आई एम लाइक टोटली आई वांट टू ड्रॉप दिस थिंग एंड I'll go again and I'll fight again, and then obviously you know you are in that IIT scene, तो आपका वो एक थोड़ा सा व्यू हो जाता है, and then obviously I told you यार वो फेलियर को थोड़ा ईगो पे तो लेना ही होता है। My father was very chill, ठीक है, my father told me यार कि देख तू वापस जाएगा तो खेलेगा तो डोटा ही, मैंने कहा हाँ यार बात तो सही है आपकी थोड़ी बहुत, तो लाइक चल देख के आ जाते हैं, चल देख के आ जाते हैं है कैसा कॉलेज, वी डोंट नीड टू ज्वाइन, देख के आ जाते हैं, सो एनीवेज यू नो देन आई वेंट टू दिस काउंसलिंग ओवर हियर इन IIT Bombay, I got this IIT BHU ceramic engineering, you know, so I'm like what the fuck is ceramic engineering, ये कोई engineering होती है, it's not even an engineering, ठीक है, so I joined first year, and as ceramic engineering I was like what a huge mistake, I ceramic engineer, I deserve computer science at the very least, computer science deserves me. I'm the one who's like born with computers, I was playing around with computers, and all of these kids you know who want to go to IIT, they don't even know how to switch on a computer half the time, they want to do computer science because it pays a lot. Why does everybody care about paying so much? Why can't people really think for themselves beyond the payment? Another thing, you know, first day itself in the
क्लास का जो वो व्हाट यू कॉल इट, मतलब इंट्रोडक्शन टाइप का, सम टीचर इज टेकिंग एंड देन टीचर आस्क यार कि ओके नाउ कपल ऑफ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस, तो दे लाइक यार कि हाँ यार, सो सम ऑफ यू वुड लव टू चेंज योर ब्रांच, कि सो हु ऑल वांट टू चेंज देयर ब्रांच, गो टू कंप्यूटर साइंस एक्सेट्रा। एनीवेज 5-10 लोगों ने हाथ खड़े करे, हम तो भाई हाथ खड़े करने वालों में सबसे आगे ही रहते हैं। एंड देन टीचर इज लाइक कि हाँ चलो अब यार ये बताओ कि यार कि कौन कौन लोग हैं जिनके लिए कि यार ये हो गया बहुत मेहनत, 2 साल बहुत पढ़ाई कर ली, बहुत हो गया, अब ये हो गया सब आईटी का झमेला करना, बिल्कुल पढ़ाई नहीं करेंगे, अब यहाँ पे अपना कॉलेज में पार्टी करेंगे, ज्यादा वजह फालतू पढ़ाई लिखाई नहीं करेंगे, ऐसे कौन कौन लोग? मैंने कहा हाँ यार ये तो दिस इज लाइक टोटली मी, मैंने अपना हाथ खड़ा कर दिया कि हाँ मस्ती पूरी। टीचर लाइक अरे तुमने तो उसमें भी हाथ खड़ा करा था कि तुम्हें ब्रांच चेंज करनी है। हाँ ब्रांच चेंज करनी है। और तुम यहाँ पे तुम्हें पढ़ाई भी नहीं करनी है? बोला हाँ बिना पढ़ाई के ब्रांच चेंज करनी है। ऐसा फॉर्मूले से होगी तो हम इस फॉर्मूले से करेंगे ब्रांच। सो धर्म, जनरली कॉलेज में एक तो होता है एकेडमिक्स से जो आप सीखे, दूसरा होता है जो आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस एंड रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस मिला। तो आपका एकेडमिक्स के सिवाय college experience कैसा रहा? Like, did you have interesting internships from which you learned something, or was there any extracurricular activity that taught you something? I wanted to be an engineer, so I wanted to make games. And for being an engineer, I had to be in computer science. But now I don't have, that kind of engineering, computer science. But today, the world has changed. You don't need thousands of engineers to make games. ठीक है, एंड द होल आइडिया वाज कि यार इसके ऊपर पूरा डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ाई है, तो यू कैन इनवाइट अदर फ्रेंड्स एंड यू कैन गेट अ लॉट ऑफ एक्टिविटी इन योर ऐप, और आप इसके ऊपर ही गेम में बना सकते हैं, एंड इट हैज बिकम ईजी. People can really, you don't need thousands of engineers, but it was very profound. मतलब app store is very profound, we don't realize it now. तो मैंने सोचा अब ये चलो सीखते हैं वेबसाइट कैसे बनानी है, क्या करना है, ठीक है. एंड तो आई रीच्ड आउट टू दिस सीनियर. तो हर ब्रांच में ऐसा कोई एक टेढ़ा आदमी होता है जो उस ब्रांच का होता है, बट उसको कंप्यूटर साइंस आता है, ठीक है, बिकॉज ही इज अ पैशनेट इंजीनियर, ठीक है. सो आई रीच्ड आउट टू माय सीनियर पैशनेट इंजीनियर, सो हिज नेम्स पुष्कर श्रीवास्तव, स्टिल गुड फ्रेंड्स विद हिम, ठीक है. एंड उनके पास गया, मैंने कहा यार मेरे को बनाना है अपना गेम, मेरे को बनाना है वेबसाइट. तो लाइक क्या बनाना है? आई एम लाइक यार मैं ऐसे आईपीएल आने वाला था, सो आई एम लाइक यार मेरे को आईपीएल क्रिकेट गेम बनाऊंगा, मैं एक आईपीएल का फैंटेसी गेम बनाऊंगा, ड्रीम 11 टाइप्स. तो मैंने बोला कि अब ये बनाते हैं पूरा का पूरा. इज लाइक यार कि चलो फिर पहले डिजाइन करो कि कैसे बनाना है, क्या दिखाना है, ठीक है. एंड देन आई स्टार्टेड कि यार अभी डिजाइन किसमें होगा. सो आई गूगल, आई रियलाइज्ड कि यार ये फोटोशॉप करके कुछ होता है, ठीक है. तो ऑब्वियसली पायरेसी जिंदाबाद, तो सारे सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लिए अपन ने, फोटोशॉप से लेके ड्रीम वीवर से, ठीक है. एंड फिर हमने पढ़ना लिखना चालू करा. पढ़ना लिखना एक W3C स्कूल करके है, शायद आज भी है ही, ठीक है. एंड तो आई स्टार्टेड लर्निंग फ्रॉम देयर कि भाई फ्रंट एंड में HTML CSS जावास्क्रिप्ट ऐसे ऐसे होता है. जावास्क्रिप्ट का कम ही काम करता था मैं, HTML CSS में ऐसा ऐसा हो जाता है. फिर एक बैकएंड सर्वर होते हैं, वैम्प लैम्प होता है, इसमें PHP होता है, वो एक सर्वर लैंग्वेज है, उसमें कंप्यूट होगा, एक MySQL लगेगा आपका, उसमें डेटाबेस चलेगा. सो आई अंडरस्टूड एवरीथिंग. सो आई अंडरस्टूड डिजाइनिंग, आई अंडरस्टूड फ्रंट एंड, आई अंडरस्टूड बैक एंड, आई अंडरस्टूड द मोनेटाइजिंग एस्पेक्ट्स कि भाई मोनेटाइज कैसे करते हैं, एड नेटवर्क्स क्या होते हैं, एड नेटवर्क्स कहाँ से आते हैं, कोमली में कैसे करना है, गूगल में कैसे करना है, वेबसाइट होस्ट कैसे करनी है, सर्वर कहाँ से आएगा, डोमेन कहाँ से लेना है, उसके अंदर SEO कैसे करना है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कैसे होगा, इमेज टैग्स कैसे डलेंगे, सब कुछ मुझे पता ही नहीं था कि क्या नहीं समझ सकते. एंड आई गॉट अ डोमेन कॉल्ड एज IPLcricketgame.com, ठीक है. तो वो काफी मैंने SEO ओरिएंटेड डाउनलोड करा था, मतलब खरीदा था कि यार इसमें लोग सर्च करेंगे IPL गेम इंडिया ऐसे तो आ जाएगा. I still have that domain, and then I deployed my website on it, and then Google ने मुझे रिजेक्ट कर दिया कि यार आपका डोमेन 6 महीने पुराना नहीं है, something like that. तो मैंने कुछ एक दूसरा नेटवर्क थे कोमली, याहू, उनको डाला. एंड देन आई थॉट कि यार चलो विजिटर्स आएंगे और पैसे आएंगे, ठीक है. एंड व्हाट हैपेंड वाज कि यार आई रेड ब्लॉग्स एंड एवरीथिंग. तो ज्यादातर ब्लॉग्स शायद तब अमेरिकन्स ही लिखते होंगे. सो एवरीबॉडी इज लाइक यार कि दिस इज कॉल्ड एज CPM इज लाइक ECPM, यू गेट मनी पे एवरी 1000 इंप्रेशंस, इट्स लाइक $5 $7. आई कैलकुलेट, मैंने भी कैलकुलेट कर लिया या वो 1 मिलियन इंप्रेशंस, $7 per 1000, $7,000 सही है, ज्यादा नहीं है, ठीक है. अपने 3-4 लाख रुपए हो जाएंगे, अपन जोहान्सबर्ग जाएंगे. मैंने अपने रूम पार्टनर को बोला अपन तो बैग पैक कर ले, अपन फाइनल जा रहे हैं जोहान्सबर्ग में, ठीक है. एंड so I'm like ठीक है. फिर मैंने देखा अब मेरी CPM रेट्स आएंगी, I got some traffic. मैंने थोड़ा पॉपुलराइज करा अपने सर्कल्स में, अपने लोकल नेटवर्क्स में, तो लोग भी ट्रैफिक में रजिस्टर वगैरह हो रहे हैं, थिंग्स आर गोइंग गुड. बट फिर पहला जो आया 14 दिन का 7 दिन का रिपोर्ट और लाइव ही आने लग जाता है, इट वाज सो पुअर यार, मतलब क्या बताऊं. मतलब इट वाज लाइक 5 पैसा शायद, मतलब 50 पैसा भी नहीं, मतलब ऐसे 5 पैसा, ठीक है, कुछ ऐसा चल रहा, मतलब 1 रुपए भी नहीं आ रहा है. मतलब क्या हो क्या, इट वाज सपोज्ड टू बी
₹50 होना चाहिए था और ये 5 पैसे आ रहा है, मतलब लाइक 1000x का, ये कितना 10,000, कितना डिफरेंस कितना है इसमें, ठीक है। एंड देन आई स्टार्टेड गूगलिंग अगेन एक्सेट्रा, एंड देन आई रियलाइज्ड यार ये कुछ देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ दिस सब कॉन्टिनेंट ट्रैफिक, यार ये इंडिया के लोग और ज्यादा पाकिस्तान के, यहाँ पे ज्यादा क्रिकेट चल रहा है और यहाँ पे ऐड नहीं है और यहाँ पे लोग पैसा नहीं है, तो यूएस की जनता होती है तो पैसे आते हैं। सो सैड यार, सो सैड एंड डिप्रेस्ड, मतलब फॉर अ व्हाइल, क्या क्या यार, मतलब मैंने फिर आगे उसमें, मतलब मैंने इतने टाइम उसमें इतना मेहनत से उसको बिल्ड करा, एंड आफ्टर 3 वीक्स जब उसका मेंटेनेंस करना था ना कि बस आज का रोज का स्कोर अपलोड कर दो ओवरऑल, एंड आई जस्ट कुडंट डू इट। मैं मतलब कर ही नहीं पा रहा हूँ यार, मतलब आई डोंट नो, मतलब मेरे को भी अपने बारे में रियलाइज हो रहा है, ठीक है, कि यार ये व्हाई कांट आई रियली डू इट, मतलब एंड देन आई एम लाइक यार क्या मैंने इतने टाइम तक इतना कुछ करा एंड नाउ आई कांट रियली डू इट। सो आई रियलाइज्ड कि यार it's easy to be, excited about, while you're building something you really don't care about, but I realized about myself कि यार कि जो maintenance का काम होता है, in which it gets routine, it's get mundane, कि भाई रोज ये करना है every day, that's what we call grind, and I was tired for it, मतलब I really need something that really keeps me motivated if there's such a grind. So everybody is looking for internships, again they are googling good internship, they are going to some websites called as Let Me Know, best internships, 10 internships, something like that, and I'm like why can't I go to that website, and there's obviously जैसे bazi.com पे you can buy and you can sell also, okay? Just like on the internship website you can look for internship but you can post internship also. So I decided that I'll post an internship. I said that we are going to make games on the Facebook platform this time, and I knew what to do, so I made a complete game design document. I hired 3 interns. I got a front end engineer, I got a back end engineer, I got a designer as well, and then for the next 3 months we really slogged hard, and then I made another game on this then Facebook canvas platform called as Battle T20. So it was very well designed, but once again I think वही शायद थोड़ा subcontinent का traffic etc, things like that, तो वो बहुत ज्यादा कुछ, तो उसमें कोई पैसे भी नहीं आए, ठीक है। मैंने भी मतलब उसको I kept delaying the release for a while. Then later जब मैंने release करा, I think it was the whole team had lost a lot of motivation, मतलब interns को motivate करना tough होता है, and मतलब कि ठीक है, फिर उसके बाद में ये जो third year वापस से it really kicked off, and by now I'd registered a private limited company for these interns etc, working with me. Maybe it had become a long and tough grind यार, मतलब 3 साल हो गए थे, मतलब मेरे को games बनाते। My whole mission was that I won't take a job from IIT, and somehow I'll create something that pays me good enough, जो अपना ओरिजिनल गोल था कि अगर गेम बनाते हुए पैसे मिल गए तो लाइफ सॉर्टेड। 3 साल होने लगे, एंड आई एम लाइक यार आई रियलाइज्ड कि यार ये शायद अभी नहीं हो पाएगा, क्योंकि एक तो मेरे कोई दोस्त साले कोडिंग करते नहीं है, सीखते भी नहीं है, ठीक है, और ये पूरा कोडिंग का इसमें काम है। एंड देन आई थॉट लेट्स सी व्हाट हैपेंस। तो मैंने इस टाइम पे थर्ड ईयर के अंदर आई स्टार्टेड अप्लाइंग अगेन फॉर सम इंटर्नशिप्स, एंड पूरा आइडिया ये था यार कि अब इंडिया में तो करेंगे नहीं इंटर्नशिप, तो यूरोप में करेंगे कहीं बाहर। एंड सो वी लाइक यार कि फॉरेन में जाएंगे इंटर्नशिप करने थर्ड ईयर के एंड में, तो हम 21 साल के हैं, मेल है, हमने कहा थोड़ा यूरोप देख के आते हैं क्या है। एंड आई वाज लकी, आई गॉट दिस इंटर्नशिप एट in the southern part of Germany. There's this place called as Karlsruhe. It's very well located, and the professor was very kind. He told me कि यार I really trust you, so you can even bring a team of 4, any 3 people you think that would be great to work with you. I'll just interview them, and he's paying everybody like I think €1,000 upwards per month. तो खर्चे वर्चे सब taken care है, ठीक है। So it's an amazing opportunity. So our job was काम का ज्यादा तो क्या बताऊं, बट इट वाज काइंड ऑफ लाइक मशीन लर्निंग टाइप्स था कि वी यूज्ड टू स्कैन MRI स्कैन्स ऑफ पीपल विद कीमोथेरेपी, मतलब कैंसर एंड कीमोथेरेपी, एंड लाइक कीमोथेरेपी डजंट वर्क ऑन ऑल कैंसर पेशेंट्स, सो वी यूज्ड टू प्रेडिक्ट ऑन पास्ट डेटा कि भाई देयर इज एन 80% प्रोबेबिलिटी दैट कीमोथेरेपी माइट वर्क ऑन योर ब्रेस्ट, अदरवाइज इट माइट नॉट वर्क, स्पेसिफिक टू ब्रेस्ट कैंसर ओनली, ठीक है। एंड इट्स वेरी कूल, मतलब वापस से वंस अगेन यार आई एम अ होल बीस्ट ऑफ गोइंग टू डिफरेंट एनवायरमेंट्स, लर्निंग फ्रॉम देम। आई रियली टुक दिस यूरोप अपॉर्चुनिटी टू really understand a lot more about their culture etc, and thus also understand our own biases in India mein, what are the why are things like they are, and obviously we used to work 3 hours extra every Monday to Thursday, so we got Fridays off, and I had this Ural pass with me, so every weekend I would go to a new destination. We'll go to Switzerland one time, and we'll go to Austria, and then we'll go to Belgium, we'll go to Netherlands, we'll go to France, we'll go to northern parts of Germany. The trip was coming to an end, and we were like यार कि यार ऐसी भी कोई एपिफनी नहीं हुई, मतलब ओवरऑल ना, ठीक है, थोड़ा सा रिस्क एपेटाइट और बढ़ाते हैं, ठीक है। एंड सो
I'm a football fan as well. So, this is also a golden period for Barcelona. They've just done a treble, I think, back then, a couple of years back, and then another one, I think. And Messi is this god in overall Camp Nou. So हमने decide करा कि यार हम जाएंगे, जर्मनी से हम जाएंगे, स्पेन तक जाएंगे हम, ठीक है। एंड हमारे पास में अब अभी हमें 2-2.5 महीने, 3 महीने हो गए थे यूरोप में, तो हमें पता था कि हमारे पास में एक यूरेल पास है जिसमें डेडिकेटेड टिकट्स हैं। आप रिजर्वेशन करा सकते हैं टिकट्स का एक जगह से दूसरी जगह जाने का फास्ट ट्रेन में, बट बहुत सारी लोकल ट्रेन है जो कहीं पे लिस्टेड नहीं है। शायद इंडिया में भी ऐसा होगा कि मतलब कि बहुत सारी लोकल ट्रेन है जो शायद आपकी रिजर्वेशन के बजाय दे आर जस्ट जनरल क्लास, दे कीप रनिंग। तो हमने डिसाइड करा यार कि हमें पता नहीं है कि हम एग्जैक्ट कैसे पहुंचेंगे, बट होपफुली वहां जाएंगे, वहां कोई ट्रेन मिल जाएगी, एंड देन शायद से फ्रांस के मिड से नीचे तक मिल जाए, फिर शायद फ्रांस बॉर्डर से स्पेन के मिल जाए, होपफुली हम पहुंच जाए। तो मैं और पुष्कल, पुष्कल वाज विद मी, एंड वी आर लाइक नहीं बार्सिलोना जाएंगे, दिस इज अ क्रेजी थिंग टू डू, एंड थोड़ा क्रेजी करते हैं साथ में तो है ही। एंड देन वी वेंट, एंड मतलब हम लोग ऑब्वियसली बाय देन वी हैड बिकम वेरी कंफर्टेबल स्लीपिंग ऑन रेलवे स्टेशंस एंड इनसाइड द ट्रेन्स इटसेल्फ, फॉर दिस होल 5-day थिंग। पूरा जाना आना वाज आई थिंक 2.5-3 days। वी टुक अ कपल ऑफ ट्रेन्स के भी, जैसे हमें जाना तो साउथ में है, इंटरलाकन से ही फॉर एग्जांपल या द फ्रांस में, बट हम जबरदस्ती ज़्यूरिच का अप डाउन कर रहे हैं ताकि हम ट्रेन में सो जाएं, या फिर ज़्यूरिच के स्टेशन पे, हमें पता है कि ज़्यूरिच के स्टेशन पे दे लेट यू स्लीप ओवरऑल, दे डोंट रियली किक यू आउट ऑफ द स्टेशन, ठीक है। तो we figured out our ways, and then from one train to another, eventually one of my batchmates from ceramic, Keshav, he was interning in Madrid, so his passport did not allow him to leave Spain, so but he's like I'll also come to Barcelona towards the end, ठीक है। तो हमने वो सिंक कर लिया कि भाई वो भी बार्सिलोना आ जाएगा और हम भी पहुंच जाएंगे। वो एक दिन पहले पहुंच गया हमसे, उसने हॉस्टल ले लिया वहां पे। तो we called him and we I tell him that we are in Barcelona, where do we have to come, and he's like बादल मेट्रो स्टेशन आ जाओ तुम लोग। हम लाइक ओके हम आते हैं, चलो बादल मेट्रो स्टेशन पहुंचते हैं। एंड आई जस्ट सी, मतलब वो क्या है कि वो थोड़ा सा इंडिया में तो बहुत मेट्रो तो देखे नहीं अपन ने लाइफ में, थोड़ा सा ही दिल्ली आए थे वीजा के लिए, ठीक है। सो वो जो सबवे था और वो जो मेट्रो था, शायद वो एक ऊपर लेयर ऊपर नीचे था कि भाई ये इंटरसिटी है, ये इंट्रासिटी है, व्हाटएवर, ठीक है। तो हम जिस ट्रेन से आ रहे थे, आई सॉ कि इसका नेक्स्ट स्टेशन बादल होना है। आई टेल पुष्कर, बोला कहाँ जाना है, लाइक ये जल्दी यही बादल होना ही जाना है, अभी ट्रेन छूट जाएगी। बात जल्दी से ट्रेन में चढ़ गए और 30 मिनट्स में हम पहुंच गए बादल होना। सो वी गेट ऑफ एट बादल होना, इट्स ऑलरेडी वेरी लेट, इट्स 11:30 PM, एंड एज सून एज वी गेट ऑफ वी रियलाइज दैट समथिंग्स फक्ड बैड, ओके। And there's total silence, there's like you can hear the winds, and you can hear that there's some beach nearby, कहीं बीच है, दिख नहीं रहा है बीच, पर शायद इस तरफ बीच है, ठीक है। और फिर एक तरफ शायद से सिटी हम देख रहा है, अब नई ट्रेन कैसे आएगी, क्या आएगी। पुष्कल जम्प्स इनसाइड, ही गोज, सीज द शेड्यूल, ही सीज कि भाई अगली ट्रेन अब सुबह 6:30 बजे आएगी, ओके। एंड तो हमने वहां पे भी और कुछ हमने चंदे इकट्ठे करके फिर उसमें डाले पे फोन में, फिर फोन किया केशव को, कहाँ से बोल रहे हो, यार बादल होना पहुंच गया। यार बादल होना थोड़ी बादल मेट्रो स्टेशन आना था। हमने बोला यार अब तो क्या करें, कहाँ देख रहे हो, मैप में देख के बहुत, तो तुम तो गए। हमने चलो हमारा भी फोन तो कट ही गया। तो आई लुक एट पुष्कल, एंड देन लाइक व्हाट डू वी हैव, वी लुक इन आवर बैग, हमारे पास में 2 गरम बियर पड़ी है और 2 एप्पल पड़े हैं। हमने डिवाइड कर लिया, ये चलो तुम्हारी बियर, ये मेरी बियर, ये एप्पल है। अब क्या करें, सो वी वेंट टू द बीच एंड इट्स कोल्ड, मतलब हालांकि आई डोंट नो दैट इट वाज सपोज्ड टू बी, इट्स वेरी लेट इन नाइट, सो आई थिंक कोल्ड विंड्स आर कंटिन्यूअसली ब्लोइंग। हम लोग तो थोड़े समर क्लोथ्स में थे, तो हमारी अलग ही फट रही है, ठीक है। एंड हमने क्या करें, वी फाउंड दिस बिग रॉक, ठीक है। मैंने शायद से उस एल्बम में, शायद बार्सिलोना एल्बम में ये रॉक ही है मेरा, ठीक है। एंड बिहाइंड दिस रॉक हमने थोड़ा सा मतलब समझा कि यहाँ पे हवा कम है, ठीक है। एंड आई हैड दिस 30 लीटर वाला बैकपैक विद मी, दैट वाज ऑल आई वाज ट्रैवलिंग विद। आई जस्ट केप्ट दैट बैकपैक ऑन माय हेड, एंड मैं ऊपर तारे देख रहा था, आई जस्ट, ठीक है। पुष्कल सेड यार कि तू क्या सो जाएगा क्या, मैं हाँ मैं तो सो जाऊँ। अरे यार चल मैं ध्यान रखता हूँ, फिर तू जाग जाना, ओके। तो वो थोड़ा बहुत मेरे को कुछ फर्क नहीं, मैं तो सो गया बढ़िया से, एंड आई जस्ट स्लेप्ट ऑफ लाइक अ बेबी, एंड आई वोक अप इन द मॉर्निंग, सनराइज के साथ में, फुल बीच पे सो के, ऊपर 6:30 बजे उठ रहे हैं। पुष्कल इज ऑल ग्रम्पी, ठीक है, कि भाई तुम क्या सो ही गए भाई, तो पता है रात को क्या क्या हुआ, ठीक है। देयर वाज अ क्लब नियर बाय, पीपल वर गोइंग एट 3-4 PM नियर द क्लब, अब चलो हो गया सो हो गया, वी आर अलाइव यार। मतलब इस टाइम तक आई वाज लाइक विद दिस होल बैगेज विद मी यार, कि यार वो आई कुडंट रियली डू दिस थिंग कॉल्ड एज trying to make a living playing games, and I woke up and I'm like, damn, what was I worried about all this time, if I can get lost in a different country, मतलब पता ही नहीं कहाँ है, यहाँ पे भी नींद आ रही है, अगर नींद आ रही है तो फिर टेंशन क्या है यार। And then I was I've never really flowed, but then I was like flowing कि यार कि ठीक
ठीक है अब जो होगा सो होगा, लेट इट बी, ठीक है अब मैं यहाँ पे टेंशन नहीं लूंगा जॉब की एक्सेट्रा के कॉलेज में, एंड कुछ ना कुछ हो जाएगा, लेट्स जस्ट हैव फेथ इन इट, एंड देन आई केम बैक टू माय कॉलेज, एंड देन ऑब्वियसली द प्लेसमेंट टाइम इज tricky for every college, especially if you are in ceramics and there's your whole batch is about to get placed, बाकी क्यों में अच्छी jobs लग रही है, and then what randomly happened with me was कि यार वो जो एक मेरी dream company थी Zynga, and they somehow just they came to India, okay, and they came to India, they opened their office in MG Road, so I had applied to them in San Francisco, okay, and मतलब कुछ भी random application, मतलब second year का student लिख रहा है मेरे को ले लो मैं बना दूंगा, ठीक है, ऐसे ना तो बहुत random application, ठीक है, बट एनीवेज ठीक है, दे कम ओवर हियर, सो आई रियलाइज कि यार इनका एचआर कौन है, ठीक है, एंड देन आई स्टॉक द हेल आउट ऑफ एचआर, मैं उसको फेसबुक पे पिंग कर रहा हूँ कि यार मैं कंप्यूटर साइंस का इंजीनियर नहीं हूँ बट आप देखो तो सही यार, एंड देन आई टॉक विद द हमारे यहाँ पे जो प्लेसमेंट रिप्रेजेंटेटिव होते हैं किसी भी कंपनी, ही वाज फ्रॉम कंप्यूटर साइंस, ही वाज अ वेरी गुड गाय, ही टोल्ड मी यार कम ऑन यार धर्मवीर, यू कैन सिट इन द पीपीटी में तो बैठ फिर देखना, लाइक ओके, सो आई केम टू द पीपीटी, ठीक है, सो पीपीटी इज दिस प्री प्लेसमेंट टॉक काइंड ऑफ अ थिंग, एंड आई वेंट देयर, आई हैड माय वो जो मैंने गेम बनाया था सेकंड वाला, उसका गेम डिजाइन डॉक्यूमेंट जो था वो बहुत स्ट्रॉन्ग था, वेरी डिटेल्ड 20 पेजर है, सो आई रीच देयर, एंड दिस इज आल्सो वेरी इंटरेस्टिंग टर्निंग पॉइंट, भाई वो प्री प्लेसमेंट टॉक चालू हुई, अब सब इंजीनियर्स बैठे हैं, ठीक है, एंड देन दे स्टार्टेड आस्किंग क्वेश्चंस कि भाई हमारा बिजनेस मॉडल क्या है, तो सम पीपल आर लाइक कि यार एड्स है एक्सेट्रा है, बट आई नो कि मतलब कि इट इज ऑल उस टाइम पे इट्स ऑल अबाउट एन इंटरनल वर्चुअल करेंसी वाला उनका पूरा बिजनेस, नॉट रियली रिलायंट ऑन एडवर्टाइजिंग, सो आई एम लाइक यार कि नहीं वर्चुअल करेंसी ओरिएंटेड है, देन दे आर लाइक कि व्हाट डू वी कॉल पीपल हु पे अस अ लॉट एक्सेट्रा, एंड देन नोबडी रियली नोज बट आई एम फ्रॉम द इंडस्ट्री, सो आई टेल देम यार यू कॉल देम whales, these are whales who 2% of people pay 98% of money, so and then they realize कि यार इसको कुछ तो पता है, तो वो आंसर देते देते मेरे पास में ऐसे वो 2 टी-शर्ट बैग सब इकट्ठा हो गया, तो एवरीबॉडी नोज कि अगर वो पीपीटी बेसिस पे रिक्रूटमेंट होता नहीं है, बट मैंने पीपीटी फोड़ दिया इन अ सेंस, ठीक है, सो आई लाइक पीपीटी फोड़ दिया एंड आई एम अबाउट टू लीव, सो एनीवेज ऑल ऑफ दीस गाइस कॉल मी, ठीक है, एंड आई आल्सो गो टुवर्ड्स देम, दे आल्सो कॉल मी, एवरीबॉडी हर्डल्स अराउंड हु द हेल आर यू मैन, लाइक मतलब, एंड दे हैड वन वेरी ट्रिकी क्वेश्चन व्हिच वाज एंड व्हिच आई स्टिल रिमेंबर कि आई हैड एन हैबिट, मैं तो मतलब ईमेल अपना रोज देखता ही रहता था, सो जस्ट बिफोर द पीपीटी आई हैड गॉट एन ईमेल दैट Zynga releases its new game called as Treasure Isle, and week back they had released another game, okay, so they asked this question that which is our latest game release, and so everybody is like mentioning the game that's been just released, but I know that in the morning they have released another game like 2 hours back, so I keep my hand up, and they have also given up hope कि यार ये तो किसी को क्या, and I know it, and I think they had a very small team, so I probably think that they were designing the emails and posting etc, so they are like very happy with me, and I'm also in a happy mood, I have this nothing to lose attitude, so anyways these guys are like कि आप एग्जाम दे दो अपना, जो एक एग्जाम है रिटन एग्जाम, तो आपको फिर हम बात करते हैं, तो I know how these things go, तो I just tell them कि यार वो एग्जाम तो मैं निकाल नहीं पाऊंगा क्योंकि उसमें कंप्यूटर साइंस के क्वेश्चन होंगे, ठीक है, और मैं किसी जॉब वॉब के लिए रटता वटता नहीं हूँ, मैं काम के लिए कुछ होगा तो मैं सब कर लूंगा, जॉब वॉब के लिए मैं नहीं रटता हूँ, अच्छा एग्जाम तो दे दो यार, एग्जाम तो दे दो फिर बात कर लेते हैं, लाइक ओके एग्जाम दे दो, एग्जाम दे दिया मैंने, एंड देन आफ्टर एग्जाम दीस गाइस आर लाइक यार एग्जाम के बाद मिल लेना, सो आई रीच देयर, एंड दीस गाइस वो लोग अपना लंच वंच कर रहे थे, एंड दे make me sit, so they are like Tanay and Anand, so Tanay runs this Moonfrog Studios now, okay, and so he was the studio head at that point of time before somebody else joined, okay, and so these guys were building the team, and then they start interviewing me and engineering questions, since they are there for some engineering recruitment, and I kept I do very good in puzzles, one of the puzzle I also know already but I act it out, it's a very difficult puzzle यार, वो किसी को नहीं पता हो तो वो नहीं कर सकता, ठीक है, but मैंने कहा यार अभी का भी कर दूंगा तो फिर गलती हो जाएगा, ठीक है, but we have a very heart to heart, उस puzzle के अलावा we have a very heart to heart conversation, they give me 2 dice and 3 queens ki make a game over here, okay, so they keep asking me to some make games, and they keep asking me to code some coding question, and then they eventually ask me यार कि यार अगर मान लो एक string में दूसरी string को ढूंढना है तो आप ढूंढ सकते हो, मैंने कहा एनी टाइम, तो लगे एंड कैसे करोगे कुछ बताओ, तो मैंने बोला देखो एक अब जैसे स्ट्रिंग का पहला लेटर लो, एक स्ट्रिंग को एरे में डालो, उस स्ट्रिंग का पहला लेटर लो और दूसरे वाले एरे के अंदर स्टेप बाय स्टेप चेक करो, अगर पहला लेटर कहीं पे भी मैच हुआ
सेकंड लेटर भी मैच करके देख लो, अगर सेकंड भी मैच हुआ तो थर्ड कर लो. तो दे आर लाइक यार कि हैव यू हर्ड अबाउट हेक्स टेबल्स? आई एम लाइक या आई हैव हर्ड अबाउट हेक्स टेबल्स. कैन यू अप्लाई हेक्स टेबल्स? आई हैव हर्ड अबाउट हेक्स टेबल्स यार, मतलब सुना है हेक्स टेबल्स के बारे में. So they're like, get out, man, get out, you get out. But I had a lot of fun, you know. I thought we left an impression, and then I just came out. And it was the sun was shining kind of loud. मतलब ऐसे Bollywood picture चल रही है, मेरा pink color का shirt. I'm super happy in my white stripe pink shirt. I'd given up on the dream कि यार अभी अपने आप को ही मेरे को गेम बनाने के पैसे मिलेंगे, ठीक है. And you know, just when I had given up, ये random चीजें हो रही है ना लाइफ में. Life gives you random things sometimes. ठीक है कि मतलब randomly जिंगा आ रही है, etc. Which you are not expecting. I don't think this random. Lot of things are random, but आप इतना सोच रहे हो कि आपने सब सोच लिया है, तब भी कुछ और हो रहा है, ठीक है. So yeah, anyways, ठीक है. So over here, then what happens is these guys call me कि यार, you know, we can't give you an engineering role for obvious reasons, but there is a role called as game designer. Would you like to interview for it? So then like you have to like sit on the word file and you have to write what a game should be. You have to code it. But no, you just have to write it out, and then you know, then other people will code it. आचार समझा रहा है मुझे, मेरे आंसू आ रहे हैं आंखों से, ठीक है. like यार क्या हो रहा है यार. मैंने बोला यार ऐसा कौन सा रोल होता है यार, मुझे किसी ने बताया ही नहीं. मैं तो पूरी लाइफ इंजीनियर बनना चाह रहा था कि मैं गेम बनाऊं, और अब आप कह रहे हो कि वो तो सब वेस्ट ही है, सब वेस्ट ही है, मतलब ऐसा. I don't say all those things, but I'm like, yeah, you won't get it, ठीक है. So I tell you what's the next step. They tell you have to come to Bangalore and all, ठीक है. So I'm very happy यार, उन्होंने बढ़िया मेरी flight tickets कराई, and then we had an interview. Then I also worked there for a couple of months before they extended an offer, and then they extended me a very generous offer overall. And you know, it was a great team, you know, and it was a very cool environment. I had this criteria that, you know, in India, if I have to work anywhere, we'll work in a chaddi job, okay. What we really mean by a chaddi job is that you allow people to come in shorts. So obviously, you know, that rebellious mode कि यार corporate नहीं जाएंगे और थोड़ा ऐसा ऐसी कंपनी में काम करेंगे, ठीक है. And Zynga was like totally on the top of it. Zynga was like, कुत्ता भी ले आओ अपना. So anyways, you know, I worked over there and realized कि यार कि even they were under a lot of this monetary pressure for the IPO, और इतना goals है और इतने पैसे कमाने हर क्वार्टर में $50 million चाहिए, you know. And I realized it wasn't fun यार. मतलब मेरे को लगा यार इतने टाइम से, मतलब 18 साल से सपना देख रहे हैं, 10 साल से देख रहे हैं, सपना पूरा हो गया है, you know. And eventually I think the grass was greener on the other side all along. But I was about to take it, but you know, luckily क्योंकि वो अपना IIT का एग्जाम इतना गंदा हुआ था कि अब वो इंडिया में तो अब IIT के बाद में एक और ही एग्जाम है उस टाइप का, हमारे जो जिन लोगों ने IIT निकालते हैं अच्छे से compete करने के लिए, IIM का एग्जाम. So वो JEE के बाद में जो CAT का एग्जाम था, so once again in the same rebellious phenomena कि भाई हाँ, we won't take any coaching, but you know, we'll try to give CAT, and I would once again try to attempt all of the questions in CAT. So another fun fact, ठीक है, मतलब मैंने IIT में, AIEEE में, CAT में, I have attempted all questions always. I have like जो negative marking होती है ना कि भाई ये क्वेश्चन छोड़ दो, वो कर दो, I have never left any question ever. मतलब मेरे को अगर क्वेश्चन कुछ भी नहीं आता तो भी तुक्का मार देता हूँ मैं, ठीक है. So you know, I give this CAT anyways, you know. So I got this 99.9 percentile in CAT, and then I got this call from IIM Calcutta, okay. And no other ये अहमदाबाद, बैंगलोर और other IIM से, ठीक है. लखनऊ से भी था, but मतलब just I got this from IIM Calcutta, and I was very anti MBA. I wrote a big blog. It was very famous at that point of time. Parents से बात करी, and I got, because यहाँ पे through in IIM Calcutta, जो का senior of mine from Ceramic, he told me यार कि IIM Calcutta is not like other IIMs. It allows you to be an individual. It gives you, you know, a certain sense of life as well. It won't suck you dry. मतलब otherwise the image is कि यार MBA मतलब, you know, 16 hours slog every day, all right, and you know, you have to wear a suit and a tie all the time. So I'm like यार ये मैं हुई नहीं ना, ये मैं हुई नहीं, कैसे करूंगा मैं. But I realized कि यार कि, you know, I can build companies while I'm a student as well. I've already done it in my IIT days. I can do it again in IIM. Why not? और वो जॉब साइड में जाना भी नहीं पड़ेगा, 2 साल का और कॉलेज एक्सटेंड भी हो जाएगा. And I got a deal with my, you know, mother that, you know, they won't ask me to ever take a job if I go to IIM. I'm like, so I don't go to this Zynga, and I take the final offer and join IIM Calcutta. So once again, you know, another change of environment. बनारस से थोड़ा और आगे हावड़ा तक पहुंच गए अपन. Calcutta, it was in Joka, is another village outside Calcutta, I would say. And then the, you know, MBA business journey starts. तो धर्म, आपको ये समझ आ गया था when you got into IIM Calcutta कि आपको जॉब नहीं करनी है. How did that change the IIM Calcutta experience for you? क्योंकि जनरली जो लोग IIM Calcutta जाते हैं उनका बहुत क्लियर फोकस होता है कि उनको कंसल्टिंग कंपनी या इन्वेस्टमेंट बैंक्स या ऐसे टॉप पेइंग जॉब्स चाहिए होती हैं. तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा?
in any MBA, you have to spend in the first couple of months hours making your CV. जब आपका CV perfect हो जाता है, फिर ये pre-placement talk start हो जाती है. Then there's this whole impressionable, those who went last year, थोड़ा उनसे बातचीत कर लो, maybe who have the PPO. So there's obviously, there's a lot of networking, socializing that's happening. And so I'm like, यार कि यार मुझे तो करना नहीं है ये सब, इसमें तो पूरा टाइम ही चला जाएगा 2 साल का. So I decide कि यार I'll opt out of the placements. I go and I talk with the dean. I write him an email that I need to meet. बहुत ज़्यादा हो रहा है. And then they make me sit down. They he does a counseling as well. That he asked me to even go to the formal counselor as well कि यार शायद से आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, यहाँ पे जॉब के लिए ही आना होता है. जॉब के लिए आना होता है, तो जॉब से ऑप्ट आउट इज नॉट अ स्ट्रेट फॉरवर्ड थिंग. और फिर एक बार कर लोगे तो फिर बाद में पछताओगे टाइप्स, लॉट्स ऑफ थिंग्स. सो मे बी आप थोड़ा सा लाइट कर लो, एक्सेट्रा समझ लो, ये वो. हम लाइक इंटर्न तो कर लो, फिर देख लेंगे. तो हम लाइक ओके चलो थोड़ा बहुत तो स्पेसिफाई कर ही दिया जो भी है. एंड देन मे बी आई जस्ट स्टार्टेड रिड्यूसिंग अ लॉट ऑफ माय इंटरेस्ट एंड एक्टिविटीज टुवर्ड्स द प्लेसमेंट. तो टाइम मिलने लगा, तो टाइम के अंदर आई स्टार्टेड गोइंग टू लाइब्रेरी एंड आई स्टार्टेड रीडिंग अ लॉट ऑफ रिसर्च रिपोर्ट्स. एंड सो व्हाट ऑल हैपेंड हैड बिटवीन द लास्ट 2 years is between the Euro trip and then coming back to India. मतलब 1 साल जो था पूरा का पूरा, ठीक है. Now I had started connecting models back in my brain कि यार देखो कुछ तो बात है बैकपैकिंग करने में जो होटल इंडस्ट्री से अलग है. मतलब मैं आई कम फ्रॉम बजट होटल इंडस्ट्री, मैंने पूरा रियल एस्टेट देखा है. सो आई गेट कंफर्टेबल इन द इंडस्ट्री के व्हाट आर द रूल्स ऑफ द गेम. एंड आई स्टार्टेड टू सी कि भाई देखो अगर इवन इफ आई हैव $1 million, बैकपैकर हॉस्टल इज समथिंग दैट्स टोटली डिफरेंट. आई वुड रादर स्टे इन अ बैकपैकर हॉस्टल, मीट अ hot girl, or maybe make some friends rather than being in a boring 5-star room watching TV that I can watch anyway, मतलब अपने घर में. ठीक है. And तो and then everything starts to come कि यार उन लोगों ने कैसे पूरा ट्रैवल कराया था पूरा यूरोप, कैसे ट्रेन्स के कारण पूरा इजीली अवेलेबल था, कैसे लास्ट मोमेंट में हमेशा हॉस्टल मिल जाते थे, कैसे यंग ट्रैवलर्स के लिए हमेशा मैप्स बने हुए थे. ठीक है. और कैसे बहुत सारे फ्री ट्रैवल्स हो रहे थे, वॉकिंग टूर्स चल रहे थे, टिप्स कैसे चल रही थी. ठीक है. एंड देन आई लाइक यार क्या देखो यार इंडिया इतना ब्यूटीफुल है. मतलब एंड मतलब कि उसके अंदर पूरा मेरा मानना यही था यार कि देखो उधर तो अपना 50 साल पुरानी कोई वॉर हुई है, मतलब वर्ल्ड वॉर 2 हुई है, उसमें कोई एक दीवार टूट गई. ठीक है. कोई एक गेट है जिसपे गोली के निशान है. तो इतने टूरिस्ट आ रहे हैं जिसका कोई हिसाब ही नहीं है ओवरऑल ही, और पैसे आ रहे हैं सब टूरिस्ट आने से. ठीक है. और इंडिया के अंदर तो मतलब अगर लास्ट हिंदू रूलर का अगर चौहान था, पृथ्वीराज चौहान वाज द लास्ट हिंदू रूलर, उसके फोर्ट की अभी क्या हालत है, क्या हो रहा है वहां पे मतलब जो भी है वहां पे, शायद कुणाल लव्स प्रिया लिखा होगा, आई डोंट नो. अपनी हिस्ट्री है, अपना कल्चर है, यही तो है ट्रैवल के अंदर. एंड ट्रैवल रियली हेल्प्स यू प्रिजर्व योर आइडेंटिटी. ठीक है. मतलब एंड आई हैड ऑलरेडी सीन कि मतलब कि अ लॉट ऑफ महाराजाज एंड अ लॉट ऑफ पीपल हु हैव पैलेसेस टुडे दैट आर कन्वर्टेड इनटू 5-star hotels for their revenue. When they did not have those hotels, their revenue streams were shrinking. They did not have any revenue stream. Forget about even shrinking. Okay. And the reason people like to come there is for the royal hospitality. Okay, कि यार वहाँ पे खमागणी होती है, वहाँ पे दाल बाटी खिलाते हैं या फिर आपको मटन खिलाते हैं, whatever it is. So I think I saw कि यार कि यहाँ पे बहुत अच्छा सा कनेक्शन है. और इंडिया के ऊपर जब आप इसको मैप करते हो, ठीक है, so you realize यार कि इंडिया में तो पूरा यूरोप है ही है. ठीक है. हमारे यहाँ पे मतलब कि from जम्मू टू कन्याकुमारी, from राजस्थान टू the furthest of the north east, मतलब बंगाल, सब कुछ तो अलग है यार. मतलब आप यूनिकनेस तो देखो. ठीक है. फ्रॉम लैंग्वेज, कल्चर टू एथनिसिटी टू द फूड वी ईट टू द हिस्ट्री दैट वी से टू द अतिथि देवो भव इज अ कॉमन थीम दैट गोज ऑल अक्रॉस. ठीक है. एंड आई रियली फेल्ट यार कि यहाँ पे कुछ ना कुछ अगर कुछ बनाया जाए तो मजा आए वापस से. सो आई स्टार्टेड टू वंस अगेन rather than having a dream, something like जो मैंने IIT के अंदर was a failed dream, truth be told. I had this dream that I can make games and make a living. It doesn't need to be myself who make games. And then I had decided that I'm free. I'll design the world how I want, right? And by now I had realized that if I build a company and if I get a funding of even $1 million or something before I graduate, then it'll be great. Then nothing can be better than that. And then I thought कि यार कि चलो सही है, अब पैसे वैसे तो है नहीं, पिछली बार भी स्टार्टअप बंद हो गया था बिना पैसे के और बिना को फाउंडर के. तो अपना अभी सपना रखो जेब में, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है ना. औकात में सपना रखो. ठीक है. तो काफी पेशेंटली मैंने अपने सपने को जेब में रखा और मैं लाइब्रेरी जाके मैंने पढ़ाई लिखाई चालू करी कि टूरिज्म इंडस्ट्री क्या हो रहा है. ठीक है. वो हमारे यहाँ पे इंटर्नशिप चालू हो गई फर्स्ट ईयर में. ठीक है. सो आई गॉट दिस इंटर्नशिप इन आदित्य बिरला ग्रुप. ठीक है. सो दे सेड, मतलब वो भी काफी फंकू इंटरव्यू था. तो and towards the end of the interview they said we are thinking of building this new gaming division unit and we'd like you to help us do it. तो मैंने कहा सही है, सही बोल रहे हैं, चले जाते हैं. Then I went over there and then they gave me some random work. Okay, so I did not do any shit in the
internship actually. Full काफी मस्ती मारी मैंने, ठीक है, and I navigated once again. Anyway, तो internship got done on the 5th November 2012. In the night, I told my friend that यार आज वापस से ढंग से पोकर खेलता हूँ. तो he's like चल मैं सोता हूँ, फिर तू जीते तो बताना. And I told him यार कि नहीं अगर जीतूंगा तो फिर सुबह 1 बजे जीतूंगा, so you'll be up by then. And he just laughed it off like मतलब पागल लोग यार ये लोग, ठीक है. I somehow that night I just called Pushkal, had a मतलब पोकर का मैंने गेम लगाया, and then lost some chips. फिर उनका गेम में रखा, मैंने कहा चलो ढंग से खेलते हैं etc. By the book, by the note. And somehow I was just such a beast run that day, ठीक है, and totally dominated the tournament, killing it. ठीक है, so there were like I think 8,800 people or something, and then I finished first in that tournament. And my $11 turned into $10,000 overnight, and like everything like fucking exploded. Like everybody's like यार कि boss इतने तो bankers को intern पे पैसे मिलेंगे. And then I'm like यार कि यार was it one time luck? What is the thing? This is the first time I have any money. वरना मैं यहाँ तक तो मतलब घर वालों को बीच बीच में फोन कर ही देता था, ठीक है, कि यार 5,000 भेज दो, 10,000 थोड़ा भेज दो, ठीक है, दे देते घर वाले भी, ठीक है, कि मैं कोशिश करते थे नहीं ले. बट फिर आफ्टर दैट थिंग 5th नवंबर 2012 से मैंने घर से कभी आज तक पैसे नहीं मांगे. एंड आई थिंक दैट्स अ बिग थिंग ऑल्सो अपने इंडिया में, क्योंकि हमें घर से कोई निकालता तो है नहीं. ठीक है. So anyways, ठीक है, so उसके बाद में I played for a couple of more months, and then I made another, I finished top 2 in another 2 tournaments. I've shipped another one. तो मेरा बढ़िया मतलब $15,000-18,000 का bankroll हो गया. So I got this money from myself. I had by now learned a lot about the backpackers hostel. The first year was coming to an end. I had an internship that would pay me another 2 lakhs. And then, I just, evaluated कि poker as an industry, तब तक Black Friday हो गया था. तो the biggest company was PokerStars only. So they are Canada. And the whole company was $600 million. And then the biggest player was, Daniel Negreanu, etc. And their whole winnings were like $22 million or something like that. तो मैंने कहा यार उतना भी पैसा नहीं हुआ ओवरऑल, मतलब मस्ती है, ठीक है, मस्ती है मतलब, लेकिन यार अब $1 बिलियन भी नहीं हो रहे हैं, बताओ यार. मैंने कहा यार पर्सनली वेल्थ में भी क्या $22 मिलियन हुए थे, तो फिर अब घर वाले रियल एस्टेट होल्ड करके रखेंगे तो 10 करोड़ की जमीन 100 हो जाएगी, 100 की 1000 हो जाएगी. एंड आई ऑल्सो थॉट यार काफी इंडिविजुअल चीज है, कभी बाद में कर लेंगे फ्यूचर में. देन आई थॉट कि यार कि ओके नाउ लेट अस थिंक, लेट अस स्टार्ट विद द होल बैकपैकर हॉस्टल थिंग इन इंडिया. एंड आई रियली लाइक्ड इट, सो आई थॉट दैट यार इसको करते हैं. एंड अपने पास में अपना स्ट्रेंथ भी है राजस्थान में, तो वहाँ पे फॉरेन टूरिस्ट आते भी हैं, पोजीशनिंग भी ग्लोबली सही है, तो अपन जोधपुर से ही चालू करते हैं. माय फादर हैड अ प्रॉपर्टी, तो उसके अंदर वी हैड अ वेरी स्ट्रेट बिजनेस ट्रांजैक्शन. एंड आई टोल्ड हिम दैट आई विल टेक दिस रूफटॉप ऑफ योर्स एंड आई विल इन्वेस्ट माय ओन मनी. आई वांट इट एज अ रेंटल एंड आई हैव माय फ्रेंड्स एज वेल, सो इट्स अ डिफरेंट पार्टनरशिप. तो ही सेड यार वी विल टेक 18,000 रुपीस. एंड ही रियली हेल्प्ड कि यार द होल मेकिंग ऑफ योर डिजाइन जो आप बोल रहे हो कि ऐसे कमरे बनाने हैं, तो लकड़ी के फट्टों से हमने पहले डॉम्स बना लिए थे कि यार की डॉम्स हैं, इसमें लोहे का ऐसे डबंग बेड बना, एवरीथिंग वाज मेड ऑन द साइट इटसेल्फ, कारपेंटर को बुला के, लोहार को बुला के. और एंड माय फादर इज इज एन एक्सपर्ट इन गेटिंग दीस थिंग्स अप, द लेबर ओवर देयर. सो उन्होंने पूरा का पूरा काफी हेल्प एंड सपोर्ट करा. माय लोकल फैमिली वाज आल्सो देयर इन जोधपुर. सो आई स्टार्टेड ऑफ मतलब कि जब मेरा ये समर्स का पीरियड चल रहा था, जब मैं इंटर्नशिप कर रहा था बैंगलोर में, सो दिस टाइम पे आई डिड द डील एंड रियलाइज्ड यार कि मैं खुद भी रहूंगा वहां पे, तो भी ऐसा तो कुछ इंटर्नशिप छोड़ के करूंगा नहीं, इससे अच्छा 1.5 लाख रुपए यहाँ से इंटर्नशिप से कैश इकट्ठा कर लेते हैं, उस पैसे को हम लोग इंटर्न्स भी हायर कर लेंगे और लगा भी लेंगे. सो आई हायर्ड 3 इंटर्न्स. तो ये मेरे जूनियर्स थे IIT BHU के, तो इन इंटर्न्स को मैं ले आया यहाँ पे. एंड आई स्टार्टेड ऑफ विद द नेम कि भाई सीकर्स नाम रखेंगे अपना, कि सीकर्स आर दोज हु सीक द आउटसाइड वर्ल्ड टू रियलाइज हु दे देमसेल्व्स आर, टू सीक विद इन देमसेल्व्स. ओके, एंड दे आर लाइक seeking. So I thought that it's a great theme, but then I realized from थोड़ी बहुत बातचीत हुई और बैचमेट से, and then I realized कि यार कि .com मिलेगा नहीं, and then it's a dictionary word, so branding में प्रॉब्लम होगा, गूगल में अच्छा सर्च में नहीं आएगा. So I realized कि यार कि I must think of a new word that does not exist altogether, जो भी है. And so eventually that's how we came up at Zostel. So I just started typing domain के अंदर ही साथ में, मतलब Hostel, Bostel, Costel, Dostel, सारा EFZ तक सब कर दिया मैंने. और Zostel.com जैसे ही डोमेन अवेलेबल लगा, इट वाज लाइक लव एट फर्स्ट साइट टाइप्स, कि यार दिस इज इट ओवरऑल, मतलब इट्स गॉट द Gen Z थिंग, it's Zosteling, it's Zostelers, it's Zostel, it's so powerful. ठीक है. सो धर्म, आपने डिसाइड किया कि यू वांट टू स्टार्ट अ बैकपैकिंग हॉस्टल, आपने उसका नाम सेलेक्ट किया Zostel. फिर आपका इसमें नेक्स्ट स्टेप कैसे था? लाइक हाउ डिड यू बिल्ड अ टीम एंड गेट फंडिंग? So I started meanwhile, keeping all of my friends from IIT, IIM, whoever was into entrepreneurship, really updated about the progress we are making, and what's the larger idea over here, how we might do things.
and whoever is interested can really help and contribute. So a couple of friends picked up. Chetan was one of those guys who was the first one. He was working in Bangalore, and I was with him in the internship, and as soon as I went back, he called and said ki yaar, whatever you say and you think if it works, you're going to do it full time after IIM. I told him यार देख मैं जॉब नहीं ले रहा हूँ IIM से, मैं आ ही रहा हूँ. तो he's like यार चल ठीक है फिर तू बता. And I'm like यार तुम अभी बस चालू कर दो, फिजिकली वहाँ पे पहुंचना इंपॉर्टेंट है. बस अगर 2 प्रॉपर्टी अभी चलती रहेंगी तो तब मैं आऊंगा, तब तक वी कैन रियली बिल्ड द सॉफ्टवेयर एंड बाकी का जो भी रिक्वायरमेंट होगा. ठीक है. एंड वी हैड अ ग्रेट बॉन्डिंग. हमारे बीच में ट्रस्ट बहुत पुराना, फर्स्ट ईयर से हम लोग साथ में IIT से, तो वेरी डीप. एंड ही क्विट ऑन दैट फोन कॉल इटसेल्फ एंड देन ही जॉइंड in Jodhpur. And similarly then another IIT BHU friend Abhishek Bhutras, so he was also working somewhere else. He was also IIT batchmates, and we had been decent friends back then while we were programming. He was one of those people who we used to work together studying कंप्यूटर साइंस. तो फिर मतलब कि वहाँ पे साथ में ही ऑल्सो क्विट हिज जॉब, ही ऑल्सो केम. सो द होल आइडिया वाज कि यार अभी थोड़े बहुत अपने पैसे से जोधपुर जयपुर 2 प्रॉपर्टी करते हैं, एंड देन वील ट्राई टू रेज फंड्स एंड वील सी हाउ थिंग्स गो. ठीक है. एंड देन मेरे जो IIM के फ्रेंड्स थे, आई थिंक दे वर ऑलवेज मतलब कि और ज्यादा प्रेजेंटेबल और ज्यादा पिच फ्रेंडली. आई फील माई सेल्फ एज अ रफ गाय ओवरऑल, द वे आई थिंक, द वे आई कंडक्ट माई सेल्फ. ठीक है. एंड तो यहाँ पे मतलब कि पावन वॉज अ फिनोमिनल गाय, जो मैं पहले दिन ही जो मुझे मिल गया था पोकर के टाइम पे, एंड ही वॉज डूइंग वेरी वेल. ही सेड दैट ही लव टू वर्क ऑन दिस. And then he was also interning somewhere. I told him, as soon as the name was finalized, Zostel, he was, one of the first people that I told कि boss अब अपना काफी set हो गया है, तुम आ जाओ second year में पूरा खींच देंगे. ठीक है. And Akhil Malik, was another one of my close friends, from the IIM days itself. He's my close friend. तो वो NH करके हमारा hostel था. We had a hostel rivalry was. तो हम दोनों का मतलब ऐसे वो जो main team types रहता है उसमें हम लोग थे, बाकी बहुत जनता भी थी. So we had close bond as well, and he loved traveling, camping. उसने 2-3 साल जॉब करा था, उसको पता था corporate job sucks. ठीक है. And he always looked up to me and asked यार कि तू इतना sorted सा कैसे ये ऐसे बताता रहता है, तू गया भी तो नहीं है जॉब में, तेरे को क्या पता जॉब कितनी बेकार है. ना पहले मेरा इंटर्न से समझ आ जाता है ओवरऑल. मैंने इंटर्नशिप्स करी है मैंने. ठीक है. एंड तो मतलब कि उसका भी सीन था यार कि यार कैसे ना कैसे देखते हैं कुछ फिगर आउट हो सकता है. ही लव ट्रैवलिंग, ही लव गोइंग टू माउंटेन्स एक्सेट्रा. तो ये लोग भी मतलब हिज अनदर फ्रेंड तरुण तिवारी, ही वाज 100 परसेंटाइल एंड ह्यूज रिस्पेक्ट. अपन तो मान ही रहे हैं कि भाई आप पूरे इंडिया में इतने लाखों लोग दे रहे हो, आप कुछ तो स्टड होगी. ठीक है. एंड तो ये लोग साथ में अपना कुछ एक गेट अवे करके भी स्टार्टअप का कुछ कर रहे थे, फेसबुक पेज वेज बना के कि यार कुछ ट्रिप्स कराएंगे लोगों को, कैंपिंग वैम्पिंग कराएंगे, माउंटेन ट्रिप्स कराएंगे. सो आई जस्ट टोल्ड हिम कि यार देखो यार साथ में कुछ करना हो तो दे वर वेरी इंक्लाइंड एज वेल. दे वर आल्सो लाइक यार चलो साथ में करते हैं, लोग आएंगे हॉस्टल में रुकेंगे, आगे ट्रैवल कर लेंगे. एंड अनदर वन वाज अखिल्स फ्रेंड सिद्धार्थ झांगू. सो ही हैड दिस होल स्टीव जॉब्स का जो रोमांटिसिज्म है बचपन से. सो ही वाज हिज फ्रेंड फ्रॉम MDI गुड़गांव. सो अखिल इज फ्रॉम MDI. ठीक है. तो वो MDI से साथ में थे, तो उसको पता था यार इसको थोड़ा स्टार्टअप का काफी कीड़ा रहता है. एंड देन ही इंट्रोड्यूस्ड मी टू सिद्धार्थ. सिद्धार्थ वाज वेरी पैशनेट. सिद्धार्थ ने हमारे लिए बहुत प्यारी प्यारी एक्सेल मॉडलिंग की फाइल्स बनाई. ठीक है. जिसमें एकदम ऐसे पूरे बजट फ्रेंडली एकदम ऐसे यूनिट में डालते कितना प्रॉफिट आएगा, कब आएगा, कैसे आएगा. बहुत प्यारा सा हमारा वेरी स्ट्रक्चर्ड इन द सेंस कि यार हम लोग पायलट्स कर रहे हैं, हमको बिजनेस नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, हम बिजनेस पायलट्स कर रहे हैं. हाउ टू मेक अ हॉस्टल, व्हाट आर द हॉस्टल इकोनॉमिक्स, एंड द मोर वी स्टडी इट द मोर वील बी एबल टू स्केल इट इन द फ्यूचर. एंड दैट वाज द होल आइडिया. एंड देन विद ऑल ऑफ दीज थिंग्स बाकी जो हम लोग थे जो IIM में थे, कि हम और ज्यादा क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, मतलब वी वर नॉट इवन ऑन द ग्राउंड. ठीक है. Siddharth was also in his own job. Chetan and Abhishek were the foot soldiers who were on the foot जयपुर में ऑन ग्राउंड जो थे. और हम लोगों का ऐसा था मतलब हाँ भी ग्रेजुएट होके हम लोग आ ही जाएंगे. एंड सो आई हैड नाउ आई हैड प्लेड अ VC गेम बिकॉज अर्लियर जब मैं अपन लोग डिस्कस कर रहे थे कि जब मैं IIM से ग्रेजुएट हो रहा था दैट टाइम वी वर मच मोर टुवर्ड्स द डायरेक्शन कि यार कि कुछ पैसे रहे, कुछ इक्विटी में वैलिडेशन रहे, सो दैट इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ अस टू वर्क फुल टाइम. एंड देन व्हेन वी हैड रियली स्केल्ड अ बिजनेस टू $100 million एंड उसके आसपास में, तो हमें काफी ज्यादा मुझे और ज्यादा समझ आया कि यार द पीपल हु आर really witnessing Zostel right now purely from a investment perspective, they are all looking at only the physical layer of hostels. क्या ये हॉस्टल का बेड है, इसमें 500 रुपए लगे, इसमें इतना रेंट गया, इतना बिजनेस मॉडल में आया. बट आई रियली अंडरस्टूड अ लॉट ऑफ द पैशन इकोनॉमी. यार कि यहाँ पे जो लोग आ रहे हैं, ये लोग वही लोग हैं जो मतलब कल को जाके पॉडकास्ट रिकॉर्ड करें. ठीक है. ये लोग वही लोग हैं जो यार मतलब कि अपना YouTube बनाएंगे, अपना कुछ ना कुछ अलग सी अपनी लाइफ बनाने की कोशिश करेंगे. और उस टाइप के लोग हैं जो थोड़े से रिस्क टेकर्स हैं,
और ऐसा आदमी सबके अंदर होता है, जब भी हम लोग जॉब में बोर हो जाते हैं तब हम लोग फिर हॉस्टल के लिए निकल जाते हैं। यू नो दिस इज अ डिफरेंट फेज इन लाइफ, इट जस्ट you know just like me, you know, making games in life, so I never let that dream die, ठीक है, but ऐसा नहीं है कि मैं अभी कोई फुल टाइम कोई गेम बना रहा हूँ, ओके, बट आई कीप द ड्रीम अलाइव इन मी, और वो अपन सब लोगों के अंदर कहीं ना कहीं पे वो रहता है। तो आप अलग अलग फेजेस में रहते हो, कभी आप ज्यादा कमिट हो सकते हो कि यार लॉकडाउन हो गया है, अभी तो 2 महीने के लिए बिल्कुल ही खाली है, एक एल्बम रिलीज करने की ट्राई करते हैं ओवरऑल, ठीक है, या फिर कुछ अपनी नई रेसिपी बनाने की ट्राई करते हैं, या फिर ये ट्राई करते हैं, ठीक है। सो आई थिंक वो अलग अलग फेजेस में है। इसमें बात वही है कि यार इफ यू आर एबल टू मेक मनी आउट ऑफ इट, ठीक है, लाइक आई लव टू बिल्ड कंपनीज, यू नो, विद माय फ्रेंड्स, एंड यू नो आई लव टू बिल्ड थिंग्स, तो अगर मेरे को उसके लिए पैसे मिल जाए तो वो बोनस ही है। मतलब ऐसी कोई चीज हो जिसके लिए आपके लिए पैसा बोनस है, तो फिर उस चीज के लिए पैसा कमाना भी आसान है, और उस चीज में आपके लिए मास्टरी करना भी आसान है, राइट। एंड यू नो दीज थिंग्स ऑफ यू नो डीप वर्क डिमांड दैट फ्रॉम यू, कि यार वो आपको पूरा अपना डिमांड करेंगे। तो इफ यू आर डूइंग इट फॉर एनी अदर मोटिवेशन, कि यार मैं तो ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पैसे मिलेंगे, तो आप उतना अच्छा पॉडकास्ट रिकॉर्ड शायद नहीं कर पाओ। एंड दैट्स वेयर वी आर, यू नो, एंड देन you know things moved since then. This really happened in 2016, and since 2016, you know, we you know, from on the Zostel front, we really continued to grow organically, you know, without raising any external funds for that matter, really just increasing our footprint all across the country and even in Nepal. And meanwhile, you know, I also took a break of around close to an year. I went to Europe for a while. I went to San Francisco for a while, and I really wanted to, you know, deeply once again introspect that, you know, what is the latest learnings that I've learned from this journey now, you know, starting off with 7 co-founders. You know, earlier I had no co-founder, and now I really practically had 7 and another 20 that I feel responsible for, so practically 30 co-founders for my from my mental state, you know. And then I really started to understand even much more deeper, you know, like how do I really set my next goal, you know, etc. So these were interesting times in which, you know, once again I was very free to think in terms of you know, what to do next. You know, let's say I've even done this now, you know, I've really scaled the company, we have, you know, built a very great business over here, you know, there's another business that we are scaling gradually. So, to be honest, the first time I heard about Dharamveer was when I read the newspaper reports about his court case with Oyo Rooms. The story is that Zostel started an hotel aggregation business like Oyo Rooms, which was Zo Rooms, and eventually Zo Rooms was supposed to get acquired by Oyo Rooms, and the founders of Zo Rooms would have got equity in Oyo Rooms, but that deal fell apart, and they are still locked in a legal battle, because of which Dharamveer cannot tell us anything more about that part of his story. तो धर्म, उसके बाद फिर आपने क्या किया? And you are now working on a new venture, so tell us about that also. एक चीज इसमें समझ आई यार कि अगर अपन को बहुत बड़ा कुछ बनाना है, ठीक है, सो आई स्टार्टेड टू अंडरस्टैंड कपल ऑफ की फैक्टर्स अबाउट, यू नो, मार्केट एंड स्केल। यू नो, मतलब कि देयर इज अ सफिशिएंट साइज दैट यू कैन ग्रो, डिपेंड्स ऑन द हाउ बिग इज योर मार्केट। तो अगर आप हॉस्टल के मार्केट में हैं, हॉस्टल के अंदर आप इंडिया में हैं, तो आप कुछ भी कर लो, मतलब अगर आप उस मार्केट में, तो आप गूगल जितने बड़े नहीं बन सकते, क्योंकि गूगल कुछ और ही काम करता है, ठीक है। इवन इफ यू आर द बिगेस्ट कंपनी, तो शायद आप पता नहीं जितने भी बड़े हो सकते हो। तो आई रियलाइज क्या कि दिस इज वन की फैक्टर इन द वेंचर गेम, एंड द अदर इज ऑब्वियसली स्केलिंग, कि यू नो हाउ fast you can scale anything, so how big you can grow, how fast you can grow. And then I realized ki yaar ki to create, you know, really big wealth, let's say you want to create $1 trillion, so if you look at the biggest companies right now in the world jo hain Apple, Amazon, Google, Facebook, ठीक है, so you'll understand कि यार कि they all won markets, and then those markets really won the world. So example, let's say Apple and Microsoft really battled hard for the personal computing market, ठीक है, and then everybody wanted personal computing, ठीक है, so Microsoft won the operating system over there, and you know, then Apple won the smartphone market, then let's say Amazon was the best e-commerce on the internet in 97 as well, but internet then, you know, really went everywhere, and Amazon was still there, ठीक है, so Google was the best search engine by 2000, but then internet went everywhere. So you know, these are very young companies for that matter, मतलब अपन से तो छोटी है, right? So I think मतलब वो थोड़ा सा देख के I realized कि यार कि which market is, you know, going to be very key in the future. Let's say you want to really commit your life to really building it. So you know, long story short, I, you know, shortened it down to 3 very large, you know, tech, you know, building over the technology layer markets. कि यार एक थोड़ा सा, you know, it's in the, you know, data science, machine learning. You know, there are things that will change everything from, let's say, how computing works, to how calculations work, to how maybe images are processed, or how, you know, people record podcasts, and noise reduction for that
matter. तो मैंने कहा इसमें काफी अच्छा है, बट थोड़ा रिसर्च ओरिएंटेड भी है, एंड वी डोंट हैव अ लॉट ऑफ डेटा ऑलरेडी टू वर्क ऑन. तो इसमें बहुत बड़ा बनाना थोड़ा सा टफ है इन द स्टार्टिंग फेज, एंड आई एम नॉट अ हार्डकोर रिसर्चर. एंड then there was this whole VR AR phenomena that I felt was it's phenomenal that in the next 20 to maybe 30 years everything might change of how we interact in the layers. But once again, ना तो कोई गेमिंग डायरेक्शन से एंट्री है, कोई कंज्यूमर प्रोडक्ट हो, ना कोई हार्डवेयर साइड से है, तो there's no really foot in the door in the industry. And then I really enjoyed reading about the cryptocurrency space, and I really felt that it's very first principle in their nature कि ये बिटकॉइन है, इथेरियम है, या फिर जो भी है, मतलब nobody really knows कि मतलब बिटकॉइन का क्या यूज है अभी. लाइक फेसबुक हैज इट्स ओन थ्योरी कि शायद से इसको लिब्रा बनाएंगे, कुछ स्टेबल करेंसी करेंगे, व्हाटएवर इट इज, ठीक है. सो nobody really knows that why everybody will need bitcoin. Okay. And for me that matters, because that means it's a level playing ground if you have a right theory of what to build overall. So like these are the times when startups can really really come out very strongly and fight the existing mammoth. So that's why this one startup that you even mentioned earlier. So our whole idea is that OPOC is the name of the startup. It's the idea is that the true information age is yet to come, in which anybody can make a living anywhere in the world, and just via the internet. So I think we all are right now communicating a lot on the internet. A lot of information exchange that's happening, but as platform driven it is, the monetization capabilities are still fairly limited. And I think that in the passion economy of loyal fans, etc., a lot different methods of monetization will emerge. But regardless of it, I think programming and to really program different sort of applications in which we have एक programmable money है हमारे पास में, कि कोई भी application में we can just very easily code it कि यार ये website में जितनी देर time spend करेंगे हमें per second इतने पैसे लेने हैं, या फिर ये game में अगर आपने इतना high score बना दिया तो आपको पैसे नहीं देने हैं, but इससे कम बनाया तो आपके पैसे कट जाएंगे, ठीक है. So I just think कि मतलब कि इंटरनेट के ऊपर अगर हमें हमारा जो क्रेडिट कार्ड है, मतलब हमें एक इंटरनेट के ऊपर वी शुड हैव अ बैलेंस, एंड एवरीबडी एल्स शुड बी जस्ट टेक मनी फ्रॉम द इंटरनेट बैलेंस दैट वी हैव, rather than मैं अगर नेटफ्लिक्स में जाके भी अपना कार्ड लगाऊंगा, फिर ठीक है वो तो $10 ले रहा है, बट धर्मवीर सिंह चौहान शायद $1 लेगा, बट मैं उसमें अपना कार्ड लगाना, इट्स वेरी टायरसम टू रियली डू इट. तो द होल आइडिया इज कि यार कि कहीं ना कहीं ऐसा होता कि यार कि दुनिया में 1 बिलियन लोग $1 का भी अगर रिचार्ज करा लें, तो अपने आप बहुत सारे डेवलपर्स होंगे और प्रोडक्ट डिजाइनर्स होंगे जो इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन बना देंगे उस पैसे के लिए. द होल आइडिया इज टू क्रिएट अ इकोनॉमी सिंक कि पीपल रिचार्ज देयर इंटरनेट एंड दे स्पेंड दैट मनी. Wow, what a story! The only way to conclude this episode is by using the famous line from the TV commercial of an alcoholic brand that says, "It's your life, make it large." If you like the Founder Thesis podcast, then do check out our other shows on subjects like marketing, technology, career advice, books, and drama. Visit thepodium.in, that is thepodium.in for a complete list of all our shows.